Now we will create the horizontal and vertical headers. In horizontal headers, employee details in horizontal way, like as employee ID, employee name, and salary. And in vertical header, detail of company, like as name of company, profile, address. These are headers in vertical way. So now we will create the horizontal and vertical headers. First one, use HTML tag because it is HTML document. So HTML tag, then header tag, sorry, HTML tag के बाद body tag, bg color red, body color, now center, align center, line in center. सेंटर में क्या हो जाएगा आपका, बोल्ड टैग, then underline, and heading is h1, name is infotech, technology, infotech technology. Now close the bold tag. Now then underline tag, and then heading tag, h1 heading. Now create table caption, heading is h2, employee details, close the heading tag, and close the caption. Table row, we will use table row tag, table row, and table header, table row, table header. Then next table header, employee name, now table header, salary. Now close the table row tag. Employee details, second row. Now table data, PD tag. Now close the PD tag. Table data is 101. Second one is the employee ID, employee name, table data, Rajesh, table data, salary, 1000, table data. Close the table row tag. Now in the next row data, for now copy it, for next row data, copy and paste, and change the data. EMP ID is 102, employee name is Raju, and salary is 20,000. Now next row,
Again copy it, paste, table data, employee ID is 03, employee name is Raj, salary is now close the table tag, close the table tag, close the body tag, close the body tag, then close the HTML tag. Now save it. Horizontal header dot HTML. Now open it on the browser. तो हमने यहाँ पर सेव किया है हॉरिजॉन्टल हेडर टैग। हमें हॉरिजॉन्टल हेडर क्रिएट करना था टेबल में, तो ओपन करके देखेंगे हम। ओपन विद पेज, आप इस तरीके से देख सकते हैं आपकी टेबल क्रिएट हो गई है। फोटेक टेक्नोलॉजीज टॉप में इसका नाम आ गया है, फाइल डिटेल्स, EMP ID, EMP नेम एंड मैं चाहता हूँ इसमें बॉर्डर आ जाए, टेबल बॉर्डर के अंदर हो। नाउ वी विल क्रिएट द बॉर्डर टेबल। नाउ बॉडी बीजी कलर जो हमने रेड दिया हुआ है इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, तो ये जस्ट सिंपल बॉडी हो जाएगा। एंड इन टेबल टैग वी विल ऐड अलाइन, align center, align center. Now table border is equal to 10, table border is equal to 10, and table background color BG color, table BG color is equal to yellow. Table BG color is equal to yellow. Now close it, and caption we convert it in H3 heading. Employee details. Now employee details. Now save it, and open in browser. Just refresh it and you will see that table, but here you will see that salary just move forward, so some corrections are required. तो एम्प्लॉय नेम हमने यहाँ पे क्लोज नहीं किया है, क्लोज कर देंगे। तो टेबल हेडर, नाउ सेव इट, वापस से सेव करके चेक करेंगे एक बार, रिफ्रेश, एक बार रिफ्रेश करेंगे। नाउ यू विल सी दैट your table will be ready. Product technology, employee details, where EMP ID, EMP name and salary, and it is the horizontal headers. These are the horizontal headers, and it is a horizontal header tables.